कोई नहीं मैम, ठीक मैं है, कर देता हूँ। ओके सर। ओके। Okay, well, very good evening, everyone. All eminent doctors, thank you very much for joining us for today's webinar. Our endeavor is to spread awareness about rabies, which is fatal but can be avoided once appropriately vaccinated. This is an initiative from Kedla Pharmaceuticals through its innovation to serve the society and humankind. The topic of webinar is dosage reduction strategy in rabies management, role of novel vaccines. Dear Doctor, rabies is the first three-dose anti-rabies vaccine, and with great pride we can say that rabies has successfully completed its 1 year of launch, and with more than 40,000 animal bite patients have been vaccinated, and 100% compliance was recorded, and no case of ADRs were registered. With this, it's my honor to introduce to you our speaker, Dr. Suresh Sharma. So sir, I would like you to continue with the slide. I will present my sir slide share कर देता हूँ and we'll continue with that, sir. Thank you, sir. एक Today's second. webinar, we will discuss novel 3-dose G protein vaccine ultimately key for compliance. Next, please. Yes, sir. Rabies is a public health challenge in India. Globally, 59,000 human deaths annually, highest in India. India had 20,000 human deaths a year from rabies, according for 60% of the rabies deaths in Asia and 35% globally. 91% deaths in India occurred in rural areas. Next, sir. Current management, local wound treatment, active immunization, RIG. Next. Current challenges of PEP, non-compliance. Current rabies vaccine are cell culture vaccines. Inactivated vaccines are greater than 50 years old. Technology inconsistency in potency, stability, availability, short supply, adverse events. Next, compliance. Anti-rabies vaccine compliant. Who received the full course of ARV, that is the dual doses of ARV on the recommended dates. Delayed compliant. Who completed the scheduled dose of ARV within 60 days but deviated from the scheduled regimen. Dropout in non-compliant. Who had taken at least one dose of ARV after animal bite but not completed all the scheduled doses. सर Next. स्लाइड शो नहीं हो रही है सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। मेरी हाँ मैम black आ रहा है। एक्चुअली हम टैब से डिस्प्ले कर रहे हैं, मैम एक्चुअली स्क्रीन डिस्प्ले कर नहीं पा रहे ना, तो हम अच्छा, अपने मैं टैब कर से। देती हूँ क्योंकि ना अभी शो नहीं हो रहा है, मैं कर देती हूँ स्लाइड शो। यस, मैंने सर को कहा था कि एक्चुअली हम टैब से स्टार्ट किया ना फिर मैम। तरफ से वो कर दीजिए स्लाइड को, मैं कर देती हूँ। अच्छा मैं कर दूं। मैम 6 नंबर स्लाइड कर देते हैं मैम प्लीज ना, 6 पेज पे मैम। हेलो हर सर। हाँ जी, हाँ जी, सर ना 6 नंबर स्लाइड कर देते हैं ना। एक सेकंड। अब दिख रही है स्लाइड? हाँ सर, फर्स्ट स्लाइड आ रही है, पता सर 6 नंबर फर्स्ट स्लाइड आ रही है। अब आ रही है? विजिबल सर, प्लीज कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 6। अब दिख रही है? यस सर, विजिबल सर, विजिबल, प्लीज कंटिन्यू फ्रॉम पेज 6। मैम एक्चुअली वो फुल कर रहा हूँ तो रिज्यूम पे मतलब पॉज हो जा रही हाँ है, सर, इसलिए अभी स्लाइड विजिबल है, अभी सही है। एक्चुअली फुल स्क्रीन कर रहा हूँ तो पॉज हो जा रही है, इसलिए नहीं हो कोई रहा। बात नहीं सर, आप ऐसे में ही कर लीजिए। हाँ ओके।
प्रिंस सर को बोलो वो कर स्टार्ट कर देना। ठीक है सर, तो सर टैब से करना पड़ रहा है, चलिए थोड़ा व्यू No. सर। Gentlemen, starting now. Okay. Non-compliance to 5 dose, proven cause of death. The reason of death may be due to lack of administration of rabies or poor compliance to vaccination. Next, please. Next, please. As per pie chart, 53% were non-compliant to the full course of ARV. Next, please. According to the diagram, the compliance rate of intramuscular rabies vaccine was 60%. Next, please. Again, according to pie chart, हेलो। hello. हाँ सर, आप आवाज चली According गई। to next, am I audible? यस सर यू आर ऑडिबल। Constant for compliance to complete course of anti-rabies vaccine. According to the pie chart, the major constraints of compliance to complete ARV was loss of wages, almost 47%. Next, please. Evolution of rabies vaccine. Non-compliance led to evolution in treatment exam from 31 dose to 5 dose and still on. Next, please. Meeting the unmet medical need. Am I audible? यस सर यू आर ऑडिबल। एक्चुअली आवाज जा रही है बीच में। Meeting the unmet medical need, introducing a novel vaccine with simple and shorter regime. Novel 3-dose recombinant rabies G protein vaccine. First protein subunit vaccine going on prepared by VLP platform technology. First vaccine with 3-dose intramuscular regime 0-3-7 days. Better compliance due to easy flow to the regime and less visits. Convenience, ready to use, no reconstitution needed. VLP technology. Native virus. G protein is difficult to stabilize G protein isolation using VLP technology by Cadila Pharma. Virus like particles or protein complexes exist as nanoparticles. VLP are similar to native virus particles but that do not contain the viral genome. They cannot replicate but can mimic the viral antigenicity without being pathogenic. They are capable of inducing a strong humoral and cellular immune response. VLP as vaccine. Next, please. मैम हमारे पास कुछ और आ रहा था इसमें ना, इस स्लाइड पे ना सर, इस स्लाइड हमें शो नहीं हो रही है एक्चुअली ना, हमारे पास दूसरी स्लाइड आ रही है टैब में ना। कोई नहीं, आप और आगे देख लो फेज 3 में ये वाला। Clinical study, phase 3. Safety and immunogenicity of a novel 3-dose recombinant nanoparticle rabies G protein vaccine administered as simulated post-exposure immunization, a randomized comparator controlled multicenter phase 3 clinical study as per human vaccine immunotherapeutics. Next, please. Phase 3 study to evaluate immunogenicity safety of rabies G protein vaccine administered as simulated post-exposure immunization in healthy volunteers. Randomized comparative controlled multicenter study. Total subject 800. Randomization 2:1 ratio. TH rabies 0-3-7 days regime 5-3. Next, please.
Results: efficacy, non-inferiority or seroprotection. Primary endpoint day 14 and 42 were seroprotection rate both on days 14 and 42. Novel 3 dose safety. Novel 3 dose has better safety profile compared to reference vaccine. Next, study conclusion. Novel 3 dose was reference non-inferior to reference vaccine, less adverse effects compared to reference vaccine. Novel 3 dose found Novel 3 dose was found to be safe and immunogenic, was comparable to 5 doses of WHO qualified vaccine. So next, please. थैंक यू सर। हेलो हर्ष सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। Thank you. वेल, आई थिंक सर ये बड़ा जल्दी हो गया, तो बस it is open for the questionnaire. So anybody wants to ask the question? सर कोई पूछ नहीं रहा, तो लेट्स मी आस्क यू अ क्वेश्चन सर। हाउ डज वन ट्रीट एनिमल बाइट? मतलब अगर हम किसी को एनिमल बाइट करते हैं तो आप अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में किस तरह से ट्रीट करते हैं, अगर आपको ऐसे देखा जाए तो? Sorry, come again, please. सर जैसे आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में एनिमल बाइट होता है तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं सर नॉर्मली, जैसे अगर आपका है तो? Normally, sir, we recommend both doses, अच्छा, ठीक है। and patient reacts as per their convenient and pocket-friendly treatment, sir. ओके सर, ओके सर, ठीक है सर। और सर अगर सर सर जैसे पहले लिमिटेशन थी, आपको लगता है कि बेनिफिट है हमारी डोज का और पुरानी डोज जो पहले वाली डोज का है, जो 5 डोज का हाँ, है? हाँ सर, बहुत सारे जो हमारे पास मरीज आते हैं सर, हाँ जी सर। ये उनके लिए काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे उनका टाइम और पैसा दोनों बचता है सर। अच्छा सर, काफी सेविंग हो जाती है पेशेंट्स की, और हम भी उनको रिकमेंड कर देते हैं। ठीक है सर। और हसल बसल की लाइफ में टाइम सेविंग बहुत जरूरी है, और इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर पेशेंट आल्सो सर। अच्छा सर, ठीक है सर। और सर आपको क्या लगता है, मतलब कि जो ये है सर रेबीज का मतलब मेजर ट्रांसमिशन काउज क्या है सर, अगर आप बता सकें थोड़ा सा हमें? सर ये सलाइव बाय सलाइव ऑफ डॉग्स। अच्छा, ठीक, जी सर, जी सर, समझ गया। मतलब मेजर सर एक्चुअली आई एम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द एरिया, सो वहाँ पे हमारे यहाँ पे जैसे मंकी बाइट ज़्यादा आते हैं, तो उसमें भी जैसे कई बार होता है कि पेशेंट को बोलता है कि सिर्फ खरोंची लगी हुई है हमें, तो उसमें जी भी क्या लगता है कि आपको मतलब कि हमें देना चाहिए कि नहीं, जो ये अपना 3 वैक्सीन है कि नहीं? हाँ सर, वी रिकमेंड दैट, क्योंकि दिस इज फटल डिजीज सर, और हम मंकी बाइट में भी इसको रिकमेंड करते हैं सर। ठीक है सर, मंकी बाइट और रेट बाइट, रेट एंड कैट बाइट, वी रिकमेंड ऑल दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स। ठीक है सर, ठीक है। अरुण मैम। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ सर। मैम मैं आपने कुछ पूछना है? अच्छा, तो अभी क्वेश्चन तो पूछ लिए ना आपने डॉक्टर से? मैंने तो मैम पूछ ही रहा था, आपके साथ कंटिन्यू था। ठीक है, ठीक है। सो फ्रॉम केरला फैमिली सर, वी ऑल थैंक with the like warm heart we thank you for participating in this webinar, and all the listeners who participated, and all the doctors who are there with us, thank you for participating in this webinar. थैंक यू। Okay, thank थैंक you यू sir. वेरी मच मैम। Can we conclude the session sir?
यस सर, मैम करिए। ओके ओके, ठीक है हर्ष, ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। ये टेक प्रिंस, सपोर्ट, टेक्स्ट कोड प्लीज कंक्लूड द सेशन। गुड इवनिंग। मैं ये आपके बस मेरी जो है आपको बोलना है प्रिंस, आप लॉग आउट कर जाइए। Sir, can we end this meeting? यस सर, यस सर। Okay, thank you. ओके।